Hello, everyone, and welcome to Health Live at C News today. Today, we have Dr. Manisha Mishra, MD Ayurveda Medical Advisor, Charak Pharma. Dr. Manisha Mishra is an alumni of Poddar Medical College, having completed her MD from Ayurveda Mahavidyalaya, Sion, Mumbai. Dr. Manisha Mishra has been attached with the herbal pharmaceutical industry since 2002. She currently is the medical advisor for Charak Pharma Private Limited. A keen academician, she has taught Dravya Guna for 5 years at the undergraduate level and also guided postgraduate students. She has published research and review articles in national and international journals. She has presented research papers on various national platforms on Dravya Guna, highlighting herbs in modern perspective, while maintaining the essence of Ayurveda. Her area of interest is herbs and their clinical uses, along with conservation of the environment. So I welcome Dr. Manisha. Hello. Hi, doctor. How are you? I'm fine, Firoz. How are you doing? Good evening, everyone. And it's been a nice, pleasant evening, end of September, and I'm going to start sharing my screen so that we utilize maximum time. Amazing. So before that, those who all have questions regarding joint pains, you can just put it in the Q&A tab, and Dr. Manisha will surely try to answer all the questions. So over to Dr. Manisha. Thank you. Thank you so much. So let me just get the first slide. Talking about Ayurveda and joint pain remedies. And before I go ahead and talk about remedies, let's talk about some facts, and people should know about it. Because arthritis scares people. Arthritis means arthro is joint and itis is pain. So arthritis is joint pain, and you should know that there are 100 types of arthritis. And 1/3 of adults will at some point in time suffer from arthritis. The most common one is osteoarthritis, जिसको आम भाषा में हम संधिवात कहते हैं. And it can affect people of all age group. Arthritis बच्चों में भी होता है, पर ज्यादातर 40-45 के पार हो जाता है, because धीरे धीरे शरीर की क्षयावस्था शुरू होती है. Arthritis can lead to lifestyle disease, can lead to diabetes, obesity, hypertension. मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Women are more prone to arthritis as compared to men. Most common cause of physical disability in India. And you should know this is your any joint in the body. एक normal joint में होती हैं 2 हड्डियां. Joint is जैसे hinge हुआ ना दरवाजे का, 2 हड्डियां, उसके बीच में एक कुशन होता है, उसको कहते हैं synovial fluid और synovial membrane. उसके किनारे किनारे एक पदार्थ होता है which is almoस्ट like muscle, which is cartilage, और इन सबको होल्ड करता है एक लिगामेंट, और ये सब कुछ एक कैप्सूल के अंदर होता है. That is how your normal joint functions. You can see this is a cartilage in blue. This is all fluid because of which there is no friction and you can walk easily, and bones are pretty far off. Now in osteoarthritis, all this cartilage degrades and the distance between the 2 bones in any joint starts reducing. And because it is reducing, 2 bones आपस, जैसे हमारे दरवाजों को जंग लग जाती है और उसमें आवाजें शुरू होती है, वैसे ही है तकलीफ देने लगता है. ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात. एक है आमवात, जिसमें बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका शरीर आपका दोस्त है और वो आपके ही शरीर के सेल्स को अटैक करता है, और तब हो जाता है ये जो सिनोवियल फ्लूइड है उसमें खूब सारा सूजन या इन्फ्लेमेशन, और ये सूजन चल होता है. कभी घुटना दुखेगा, कभी कोहनी दुखेगी, कभी टखने दुखेंगे. सो इट इज मोबाइल. जबकि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटना पकड़ता है, कभी पीठ पकड़ता है, कभी लोअर बैक पकड़ता है, बट हर वक्त मूव नहीं करता. सो कॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इज वेरी कॉमन. इट्स ऑटोइम्यून कंडीशन. तो आपकी इम्यूनिटी खराब है. सिम्टम्स होंगे कि आपको पेन है, स्वेलिंग है और स्टिफनेस है.
और छूने पे जॉइंट्स गर्म लगेंगे। एंड 30-40 के बाद हो सकता है, पर ये वाला आर्थराइटिस बच्चों को भी होता है, 12-13 साल में भी हमें दिखता है, उसको जुवेनाइल कहते हैं। It is again more in women than in men. Osteoarthritis, मैंने जो कार्टिलेज दिखा था उसका टूटना, and can have cause pain, stiffness, swelling, पर इधर गर्म नहीं लगता, swelling है, दिख रही है, but it is not necessarily hot. और नीज में सबसे ज्यादा होता है, बैक में होता है, हिप्स में होता है। अगेन औरतों में ज्यादा है, आदमियों में कम है। गाउट आजकल बहुत दिख रहा है, बिकॉज सब बैठे बैठे काम करते हैं। वेरी अर्ली फ्रॉम द एज ऑफ 30-35 इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, एक तरह का पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, एक्यूमुलेट होता है छोटे जॉइंट्स में। स्पेशली जो बाइकर्स या जो साइकिल राइड करते हैं, अंगूठे से शुरू होता है। इसको डिजीज ऑफ किंग्स कहा गया था, क्योंकि पहले राजा महाराजा वाहन जो होता था वो उनका घोड़ा गाड़ी होता था, घोड़े पे चलते थे या हाथी पे, तो पैर लटके होते थे, और लटके पैरों में जब जहां सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन है वहां जाके यूरिक एसिड रुक जाता है, इट कॉजेस पेन, एंड इट इज यूजुअली ड्यू टू एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बहुत एसिड फूड खाना। रीजंस फॉर जॉइंट पेन: इंजुरी, इन्फेक्शन, इलनेस, इन्फ्लेमेशन। वायरल इन्फेक्शन, डेंगू वगैरह हो गया तो भी कभी जाके आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बता दिया है। RA is because of autoimmune triggers. Gout is because of uric acid, which is due to excessive acidic food and alcohol. इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपने ताउम्र को ठंडा, बासी या स्टेल फूड, बहुत ज्यादा स्प्राउट्स, भीगे हुए धान्य, रुक्ष धान्य, रुक्ष मतलब ये चिप्स वगैरह जो जिसको तोड़ो तो कट आवाज आए ना, दिस इज ऑल ड्राई, उसमें रस का जाता है। मैंने देखा है कॉमनली कई लोगों का नाश्ता होता है टोस्ट विद बटर डिप्ड इन कॉफी, बिस्किट, अगेन तोड़ने पर टक आवाज आती है। तो जो हमको लगता है कि बड़ा हेल्दी है, एक्चुअली इट इज वेरी ड्राइंग, एंड इफेक्ट एक दिन में नहीं होता। As you start aging and dryness within body बढ़ती है, then आपका food drying है, everything aggravates the vayu part of the body, which controls the movement and neurons, and it leads to joint pain. Constipation, constipation जिन जिन को होता है उनमें वायु की वृद्धि बहुत होती है। वायु एक ऐसा बायो एनर्जी है जो आपके शरीर के मूवमेंट, न्यूरॉन्स, थॉट प्रोसेसेस, दिल की धड़कन, मेरी आंखों का मूवमेंट, में जो हाथ पैर हिला रही हूँ, ये सारा कुछ वायु के अधीन है। और अगर आपका वायु बिगड़ने लगता है तो आप देखेंगे कि आप सीधे चल नहीं पाते, बैलेंस नहीं होता, स्ट्रोक आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ब्लोटेड रहता है, डकारे आते हैं। दिस इज ऑल साइन ऑफ दूषित वायु। पुअर लाइफस्टाइल, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, खा के तुरंत सो गए हैं, sedentary life is very high. I see people on Saturday, Sunday, especially men, खाओ सो का पूरा चक्कर चलता है, and everybody feels कि weekend is all about resting. The body does not need to be rested. It needs to be rested only at night. बाकी सब time work is essential. Living in very cold climate, coldness is drying. आप देखेंगे विंटर्स में त्वचा सूख जाती है, आप ऐसे उंगली घुमाएं तो एक सफेद लकीर आ जाती है, which is a sign of dryness. आप कभी बर्फीली जगह पे जाए तो आपके होंठ फट जाएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। दिस इज ऑल क्योंकि मॉइस्चर खींच लेता है। जितना शरीर में ड्राइनेस बढ़ेगा उतना पेन बढ़ेगा। माल नरिशमेंट, एंड माल नरिशमेंट से ये नहीं कि आप सुखा गए हैं, माल नरिशमेंट इज overfed and undernourished. You do not have enough vitamin D, calcium, B12 and necessary minerals in your body to take care of the joint health. Joint health के लिए calcium, magnesium, potassium, chlorine, good amount of hyaluronic acid which you get from lot of good protein, इन सब की जरूरत होती है, जो शरीर में धीरे धीरे हमारा एब्जॉर्प्शन कम होता है। आपकी फूड हैबिट्स खराब होंगी तो इसकी वजह से माल नरिशमेंट एंड ओवरवेट। जितना ओवरवेट होंगे, शरीर के दो ट्रंक्स है, मतलब आपके दो शाखाएं हैं पैर, और आप उस पर जितना वजन देते जाएंगे उतना वो चरमराता जाएगा। व्हाट ऑल, तो सबको आसान तरीके चाहिए, तो मैंने बोला आज हम आसान तरीके ही बताएंगे, so that
we know कि joint, at least if you are just entering into your 50s, 60s, you should incorporate it in your lifestyle. हल्दी मतलब हमारी सब्जियों में होता है, दाल में होता है, पर अगर आप सुबह सुबह एक छोटा चम्मच हल्दी थोड़े दूध में मिला के पी लें तो हल्दी शॉट्स, हल्दी in water with a little honey and ghee is also super for reducing inflammation and treating autoimmune condition. So haldi is a great immunity booster and pain reliever. So haldi is necessary. It also is good for heart. So haldi को आप कैसे भी incorporate करें, it should be a part of your daily diet. हम डालते हैं हल्दी सब्जी में, पर शायद आपको जितनी जरूरत है उतनी मिल नहीं पाती, तो हल्दी आप पाउडर अच्छा मंगा के या हल्दी की अचार डाल के या हल्दी की चटनी बना के खा सकते हैं. इनफैक्ट नई स्टडीज ये भी कह रहे हैं कि हल्दी इज एज इफेक्टिव एज पेंटाप्रेजोल, वो मेज वगैरह खाते हैं टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक. अश्वगंधा एक दूसरा हर्ब है. अश्वगंधा आई स्वेयर बाय. अश्वगंधा जिनको आर्थराइटिस है और जिनका कार्टिलेज धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, कार्टिलेज डिग्रेडेशन रोकता है और कई बार कार्टिलेज को नया बनाने में मदद करता है. It reduces pain. It is good to reduce stress. It reduces your anxiety. It helps in peaceful sleep, and it is a great aphrodisiac. It's like a great sexual rejuvenator for men and women both. It also latest ये है कि वो thyroid conditions को regulate करने में मदद करता है, and it's useful for people जिनका memory loss हो रहा है because it helps in generating new brain cells. So it is a great herb to be a part of your daily life. You can have ashwagandha as tablets or as powder. दूध में मिला के पी सकते हैं. बहुत तरीके हैं इसको खाने के. जरूर ashwagandha should be a part of your kitchen cabinet या your supplement cabinet. Ginger, अदरक हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, पर जब मैं जिंजर बोल रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि पोस्ट 60s लोग सौंठ खाएं. अदरक जो कि गीली होती है और सौंठ में फर्क ये है कि अदरक थोड़ी तीक्ष्ण होती है, पंजेंट होती है और एसिडिटी कारक है. ये जो सौंठ है, इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि उसका छिलका हटा के जो ऑयल जो पंजेंट है वो निकाल देते हैं और सुखाई जाती है. एंड दिस बिकम्स स्निग्ध. उसमें थोड़ा सा स्निग्धता आती है और इट हैज कूलिंग इफेक्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज नरिशिंग. तो अगर आप सौंठ की चाय सुबह शाम पियेंगे, that will help with your arthritis, with your cartilage inflammation. It also is super for people who have rheumatoid arthritis. शुंठी अदरक हम आमवात का दवाई देते हैं कि छोटे छोटे लड्डू बना ले, शुंठी और गुड़ मिला के, सौंठ और गुड़, और उसको सुबह शाम एक लड्डू खाए. It will really reduce your pain, especially in winter seasons. शल्लकी एक ऐसी हर्ब है जिसका रेजिन यूज होता है, एंड उसमें होता है एलिमेंट कॉल्ड बोसवेलिक एसिड, और ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों को कम करता है, जॉइंट स्टिफनेस घटाता है, मोबिलिटी बढ़ाता है. तो शल्लकी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट केयर. So let's talk about massages. Massages should be done. अभ्यंग, शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मसाज होना बहुत जरूरी है. आप अपने हाथ से सर से पैर तेल लगा के मालिश करें. इट विल प्रिवेंट सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस. चलो अगर आर्थराइटिस हो ही गया तो जहां जहां सूजन है और आपको संधिवात है तो वहां तेल लगा के हल्के हाथों से मसाज करें, सो दैट टॉक्सिन ड्रेनेज हो, न्यू ब्लड सर्कुलेशन हो, वार्मथ घटे और इन्फ्लेमेशन घटे. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली प्रैक्टिस. You can also do dry massages, and there are researchers which suggest that actually it is one of the best way to reduce pain and without taking medication. तो वार्धक्य 60 के बाद वायु की वृद्धावस्था होती है, वायु बढ़ने लगता है शरीर में, और तेल या मसाज से अच्छा कोई तरीका नहीं है कि उससे वो कम हो जाए. सुरेंद्र जी, मैं आपसे जरूर बात करूंगी in some time. Coming to the part of स्वेदन, there is a lot of thing कि सेक करना होता है, and it is essential. अगर आपका बहुत पेन है, सुबह उठ के आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा घुटना रगड़ के ही आप खड़े हो पाते हैं, तो इंश्योर कि आप घर में ही सेक करें. आप हीटिंग पैड्स लगा सकते हैं. तेल लगाने के बाद आप गरम थैली में गरम पानी से सेक कर सकते हैं, बट सेक करना इज वन ऑफ द
very beneficial treatments for osteoarthritis and rheumatoid arthritis both. के बाद है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते. नो डिजीज कैन बी ओवरकम विदाउट गिविंग बॉडी सम पेन एंड ट्रबल. एंड योगा इज द easiest way to incorporate exercise. बहुत छोटे छोटे आसन है. आपको अगर कुछ नहीं आता तो चेयर पे बैठ के पहले सुखासन करना शुरू करें. सुखासन इज जस्ट सिटिंग इन अ straight pose and breathing, giving your spine straightness. आप Kati Vakrasan, where you just twist your spine. You do micro exercises so that in आपके joints को blood supply अच्छा मिले. सेतु बंधासन मैं सबको कहती हूँ because it strengthens your spinal cord, lower back, and it is great for people who have acidity and indigestion. And Shavasana, so that you do not overthink. Somehow, एक certain age के बाद we all overthink, we all overanalyze. We are overstressed, and that will not give you anything. Pain is a part of life. You have to learn to soothe it. What are the benefits in any kind of arthritis? अगर आप योगा करते हैं तो inflammation कम होता है. आप बहुत सारे research article ढूंढ लें कि आमवात, rheumatoid और osteoarthritis में मैंने तो सामने सामने देखा है कि patient की conditions अच्छी होते हुए. Rheumatoid is such a भयानक disease कि आपका पूरा हाथ टेढ़ा हो जाता है. And there are people who practice and they are able to use their limbs again. They can lift things, they can eat by their own hand, and it is all due to perseverance and continuously doing yoga. Reduces stress, increases your flexibility. और आप जितनी चीज को आप यूज करेंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप देखेंगे आपका राइट हैंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेफ्ट हैंड का कम है, बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग दिस हैंड. Similarly, the body, if you continuously use your muscles and at least stretch and relax it, that means उसको पता चलेगा कि इसको strengthen करना है. And if you do it regularly, you will be a fit person. Yoga also reduces depression, flexibility improve करता है और pain बहुत अच्छी तरह reduce करता है. Always do yoga by learning from somebody who is well trained. अपने आप से नहीं करें. 60 के बाद अगर आपने थोड़ी भी उल्टी सीधी हरकतें की तो अगर मसल पुल हो जाता है तो it takes some time to heal. So it's best that you learn from somebody and then you continuously practice it. What are the diet and lifestyle changes I suggest? I tell everybody who has arthritis कि भैया अपना digestion improve करें. गर्म पानी पिए. सुबह सुबह चाय कॉफी से स्टार्ट नहीं करें. Start your morning with a cup of warm water. Add some, उसमें सौंठ मिला लें, उसमें आप अदरक मिला लें, हनी मिला लें, हल्दी मिला लें, cinnamon मिला लें. Anything anti-inflammatory in the morning. एक तो पेट साफ करता है, दूसरा सुबह से आपको एक लिफ्ट देता है, आपका वायु शमन करता है. Warm is something which will reduce pain. Always, always, always आपके लंच और डिनर के बाद 100 कदम चलें. नई हिम्मत है, कोशिश करके 50 कदम चले. And slowly you will build your endurance to more what do you say, steps of walking. There was a call and I just took it. Always have fresh and warm meals. They should be soupy. उसमें थोड़ा स्नेह या तेल होना चाहिए या घी होना चाहिए. Ensure कि आप तेल के बिना खाना नहीं बनाए. What happens is सबको लगता है कि अभी तेल खत्म कर देंगे तो मैं पतला हो जाऊंगा. 2 tablespoons of oil, ghee is required through the day. आप सोचिए आपके सारे joints में स्निग्धता है. There is some moisture, there is some fat. Brain is 20% fat. अंदर अगर आपने बंद ही कर दिया तो where will the body get the fat from? So you have some oil, have nuts, have walnuts. Just do not stop completely and do not start using baked stuff. ये लोग जो baked and grilled खाते हैं ना, उनका meat based food ज्यादा होता है, तो meat में अपने आप का oil होता है. And that is why Westerners are avoiding oil because उनका तो खाना ही आपने जो meat choose किया, it has its own fat. हमारी सब्जियों में नहीं होता. Vegetarians suffer a lot because of that. Avoid processed food. Sprouts बहुत वातवर्धक है
और मैं सबको मना करती हूँ कि स्प्राउट्स नहीं खाएं, खाएं तो महीने में एक बार खाएं, और वो कच्चे नहीं खाएं, उसको पका के खाएं। एंड सो जिसको भी आपने भिगा के बनाया है, जैसे राजमा हो गया, लोबिया हो गया, मटकी हो गई, इसको जब सोक करके सुबह बनाएंगे तो बहुत हैवी होता है डाइजेशन में, और उसका जो छिलका होता है इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और वायु बढ़ता है। कच्चा सलाद, वेस्टर्न्स भी ना जब सलाद खाते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं, नमक डालते हैं, काली मिर्ची डालते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं, उसको 1 घंटा रखते हैं फिर खाते हैं। हम यहाँ 4 गाजर काट देते हैं, खीरे काट देते हैं, और गाय की तरह अपने प्लेट में रख लेते हैं कि वो हमने सलाद खा लिया। दिस इज नॉट द वे टू हैव सैलड। आपको चाहिए कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, उसको दही में आधा 1 घंटा मैरिनेट करें, थोड़ा पेपर डालें एंड तब खाएं। तो चूमर जैसे खाते हैं, दिस इज हाउ यू नीड टू हैव सैलड। हम गाय जैसे बने नहीं है कि हम इस तरह की चीजें पचा लें। दैट विल एग्रेवेट योर इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस। अवॉइड वाटर फ्रॉम द फ्रिज, अवॉइड कोल्ड फूड एंड अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट, and exercise regularly and practice yoga. Apart from that, Charak and Vedistry have this supplement which is Go 365, which has shallaki, haldi, glucosamine and chondroitin, जो कि शरीर ही बनाता है, पर एक एज के बाद शरीर ने बनाना कम कर दिया होता है, तो we supply it from outside to strengthen the joint. It reduces pain, inflammation and arthritis, and actually आपकी joint health अच्छी कर देता है in early arthritis. So if it is just begun, this is one of the best supplements you can try along with the ointment. इसके बाद अगर आपको कंसल्ट करना है तो you can come on the website of Vedistry or Charak, and there are doctors to talk to you. I am there to talk to you. This is a range of products that we have. Ashwagandha की मैं बात करी थी, that is available with Vedistry. There is haldi, there is sallaki, there is a lot of stuff which is, you can just go to the Vedistry website and check it out, VEDISTRY, and you will know more about the supplements that you might be looking for. There's a whole cosmetic range and personal care range of Moha. Apart from that, you please visit us at this website. There's a number toll free, 9920773709 is my personal number in case you want to consult or know about anything. I practice at Versova. If anybody is willing to meet and consult, you can always connect with me and I'll be happy to help. With this, I close the topic and I'll take questions. Thank you, doctor. That was an amazing, elaborated, actually, a PPT, and many things I also learned today, because I do have, being into a dance industry, I do have many joint pains actually. So we, first of all, for all the participants, for all the attendees we have, there is a link given below, that is www.vidistry.com. You can go and search for all many products there are. Secondly, if you want to book a free consultation with Dr. Manisha Mishra, you can just contact WhatsApp on the given number, or else her personal number is also in the chat box. You can always message her. But before that, if you have any more queries, you can just put it in the question answer tab. But we do have many questions right away. So this is from Deepa Ved. I have knee joint pain. I suddenly stretched my hand for a glass of water and it caused a severe pain on my right hand above elbow. But below my shoulder, I suppose it is ligament tearing or what? I don't know. Please advise. Tears don't happen because you're lifting a cup of glass. Tears happen because you're lifting weights which are up, थोड़ा अपनी औकात के बाहर है. So it could be tendinitis. Your tendon is stretched and it is inflamed. It is known as tendinitis. If it has happened just today, तो आप थोड़ा सा गरम ठंडा सेक करके, थोड़ा बर्फ and then warm, बर्फ warm, ये सेक करके you reduce the inflammation and then daily give warm sake. And if the this tendinitis takes almost 1 month to heal, तो आप उसको मालिश, हल्का तेल लगा के सेक करते रहे. And if you have something, I don't know your age, but you can have ashwagandha to reduce pain. That was nice one. Moving on, next we have Shrikant Kulkarni ji. Shrikant Kulkarni, he's 71. For relief from joint pain, do you recommend hot water or cold water treatment?
Hot water or cold water, massage or drink? Massage. You use hot water. Hot water. cold water press is important अब जब नया नया इंजुरी या नया नया पेन शुरू हुआ because it reduces the blood capillary flow तो inflammation कम होता है. But if it is a chronic pain ठंडे से aggravate होगा तो give it a warm fomentation only. गरम सेक ही करें. Very nice. Thank you, ma'am. Moving on, next we have Guru Charan Jain. He has a pain knees while walking up and downstairs only. While walking, legs feel like tired. As I keep walking, momentum picks up. In particularly pain, in particularly feet pain. Actually, he has. So feet is एकदम नीचे. So I don't know your weight. You will have to check your weight and reduce it. Walking is easier. Climbing down causes pain. Climbing up once you start. So what you do is daily climb 10 stairs up and 10 stairs down as a routine post meals. That will start building strength in your ligaments and muscles. For if your feet is hurting a lot, it could be due to spurs in your heel or your shoes are not very comfortable. So ensure that you have some gel insoles in your shoes when you're walking, and try for such people I recommend कि आप सुबह सुबह कोशिश हरी घास पे नंगे पैर चलना शुरू करें. Your body will have more strength. So start walking in the morning on हरी घास. Amazing. Walking on green grass is always. Now we have AK Chopra ji. He's 73. Having knee pains, he was advised knee replacement, but he does regularly yoga, cycling, and walking. Sometimes there is a mild swelling and pain in his knee. Please advise. आप ना अगर आपको नी रिप्लेसमेंट बताई गई है तो chances of cartilage degradation are very high. If you can cycle, that means your knee is in good health. One thing I will suggest, in case you have any Ayurvedic center close to your house, go there and get Yoga Basti done. These are oil and kadha enemas which will strengthen your joint and reduce. तो आपका knee replacement 2-5 साल और deter हो जाएगा. And get it done every yearly, you will have stronger knees. So that is yearly only one, so please do it, sir. Next we have Shrikant Kulkarni ji. Should we avoid swimming in cold weather? If the water is warm, don't avoid. If the water is cold, avoid. Yes, please. If it's cold, please don't go. Next we have SK Agarwal ji. He's 76. Suffering from sciatica pain for 6 months. What should I do? Any exercise, any medicine for pain? Cold ice formation will help. No. Ice fermentation does not help in sciatica pain. Sciatica pain is a nerve trigger, and you really, the only 2-3 things which help sciatica pain is taking classical Ayurvedic medicine like Gokshuradi Gugun, giving तेल का मालिश करवाए आप और गरम सेक करवाए, and there are exercises to open up the hip so that the ये जो nerve compressed हुई है वो खुलने लगेगी. But oil massages with a little shake should be a part of your daily routine. And अगर आसपास कोई आयुर्वेदिक कॉलेज सेंटर है जहां भी आप रहते हैं तो वहां आप भी जाके एक बस्ती करो. बस्ती is that medicated oil enemas. Get it done. I didn't knew this because I have sciatica since 6 years and still I'm You managing. come to my clinic, I'll correct you. Surely, then you are there with us. Thank you, Doctor, for that. Now we have Marjorie Fernandez. Her question is when to use dry massage and oil massage, and which is better for rheumatoid arthritis and osteoarthritis? Which oil to use? Which oil to use? I recommend for osteoarthritis, I recommend a lot of Sahachar tel, which is a classical oil preparation. You can use Go 365 ointment or spray also. For osteoarthritis, always give oil massage and then give warm fermentation. And warm fermentation should be with a little steam, yeah, garam pani ka bag.
For RA थोड़ा तेल लगा के you should सेको with छोटे छोटे सैंड बैग्स बना के या छोटे चावल के बैग्स बना के तवे पे गरम करके उससे सेके. आमवात को वृक्ष स्वेद चाहिए. You have to give dry fermentation. Such a nice remedies actually. I'm hearing for the first time also. Next we have Shamla Raviji. Is lupus some type of arthritis? What are the early signs of lupus? Is it reversible? Is it hereditary? It could be hereditary. Lupus is an autoimmune disorder जिसमें स्पाइन के ऊपर एक नर्व्स की लेयर होती है जो आपकी बॉडी खुद ही अटैक करके गलाई जा रही है, जिसकी वजह से द पेन इज इंटेंस. People have difficulty. Slowly they lose movement of limbs, and it is a very debilitating ailment. And you need to correct your immune system. You need to correct your inflammatory triggers. You need to change your diet. Shift to a complete sattvic diet which does not have non-veg, which is simply plain cooked with simple ghee, hing ka tadka. Do not have wheat. Stick to rice. लोगों को लगता है राइस से मोटापा होता है. Rice is one of the safest foods you can have. Have jaw, have sattu, and I don't know where you stay, but you should find a nice healer who can help you with yoga and Ayurveda. You are on mute. Firoz, आप mute पे हैं. Oh, I'm so sorry. So you can just visit to vedistry.com and you can search for all our products. There are many products, and you can book a free consultation. You can just WhatsApp, and there is a personal number of Dr. Manisha also, so you can contact her also. Moving on, next we have Bharat P. Mehta. He is 66. He is taking uric acid medicine, also taking allopathy medicine. Additional problem of skin allergy has started. What medicine you suggest to keep physical fit? You know, for you, what I'll suggest is have a lot of giloy. Giloy is good to reduce uric acid. Giloy also helps to improve your immune system. Since you have allergy is पित्त इतना बढ़ गया आपके शरीर में कि आपको उसको कम करना है. सुबह सुबह सोख मुनक्का, 5-10 मुनक्का आप रात को सोख करें और उसको सुबह चबा के खा लें खाली पेट. That will slowly reduce your uric acid levels. आपकी चाय कॉफी कंजम्पशन बंद करनी है. अदरक की चाय बिल्कुल नहीं पीनी है. एंड गिलोय की टैबलेट्स मिलती है, आप उसको 2-2 गोली 3 बार लेना शुरू करें. Giloy tablets, please go for it. And next we have, this is from Harihar Ramanathan ji. He is asking for a mother. My mother is 84 and weight is 65. Height is 5 feet. She can't stand or walk for more than 15 seconds due lumbar stenosis. Anything possible for her? Lumbar stenosis is आपके bones ऐसे fuse हो गए हैं कि the spine is unable to hold for long. And she's 84, 65 kg is okay. What you can do is frequently give her this oil massages to the back. There are therapists available who can come to your house and do this, or you can do it yourself. छोटी सी टॉवल तिल के तेल में, वार्म तिल के तेल में डुबा के उनके कमर पे रख दें for 15-20 minutes and then remove and give some dry fermentation. It will slowly start working. You can also give her for 84 year में ऐसे दवाई suggest कर दूं, it is unfair on my part. But if you want, give me the complete history and maybe I'll help. Please do consult your doctor, or else the number has been given there. You can just contact Dr. Manisha anytime. Next, we have an anonymous attendee, 61 years, and my right hand index finger base has started pain on bending. Is it the beginning of arthritis? If yes, what do you recommend to take at this stage? He's 61. First of all, I'll recommend कि आप ऐसा कुछ चीजें लें जिससे कि digestion improve हो. This is a sign of inflammation, which is a sign of poor gut health. आप त्रिफला से शुरू कर सकते हैं. त्रिफला with a little honey और सेंधा नमक सुबह शाम एक छोटा चम्मच खाना शुरू करें. That will take care of your acidity, gut and पेट साफ करने लगेगा, तो inflammation थोड़ी कम हो जाएगी. You have to start. Thank you. Then we have Guru
Gurvinder Kaurji. I have pain in my knee. The doctor had advised surgery. I am trying physiotherapy. My pain shifts from feet to knee, knee to hip bone. Please suggest. Look like a case of RA, because shifting pains are very common in RA, or it could be just nerve inflammation. So if you're having this frequent shifting of pain, आप physiotherapy कराएं, but orally what you can begin right now is ashwagandha, 1 tablet, 2 times in a day. It is not a great pain reliever, but it will help you help relax the muscles. And try abhyanga, oil massages to the whole body once a week. Amazing. Regarding RA only, as we just went to, this is for Surendra Mohan Katharia. I have RA since 2010. I have done a lot of control on my diet. I have slight pain in the morning in my right shoulder. In test, my RA factor is always settled at 120. Shoulder pains are somehow easy to treat because they are more related to cervical thing, and it is in the morning, so it is related to slight inflammation in the morning. आप नाक में एक बूंद तिल का तेल या घी डालना शुरू करें and see difference in a week's time, because shoulder pains go away when you do nasya. Then we have Janka Modi ji. She is 65. She is saying for slip disc, is massage only, is there a sole by machine using disc helpful for pain in lower limb? For what is it useful? Slip disc, actually massages I don't recommend. I only recommend fomentation and a bit of traction so that your disc space improves, and traction is the thing which will work more for you. I don't know what machine you're using. I'm not aware of the massage machine, but you can do fomentation. It will help. Thank you. We'll just take more 2 or 3 questions. And everyone do register yourself. There'll be a pre-link over here. You can register yourself for all our health webinar that is on Saturdays. And today the event has been sponsored by Vedistry and Charak Group. So thanks for that. And moving on, next we have one more. That is, my age is 61. I have got rotator cuff muscle tear. I get pain sometimes, but what medicine should I take? Muscle tear can be relieved only when you give rest to that muscle, है ना? जब आपको छिल जाता है तो आप उस पे पट्टी लगाते हैं so that दोनों skin आसपास आए और जुड़े. So if there is a tear within your body, you just make it stable. You wear something so that it does not move. That is the first thing that you do. Second thing that you do to heal yourself is you take some nourishing gugul like a Keshor gugul, and stop eating anything which is drying to your body, and sugar band kar dijiye. Okay, that's nice. Next we have Om Kumar ji. He's 60 years. He's having pain in both the knee due to osteoarthritis. Not taking any painkiller. Any Ayurvedic medicine for pain relief? You can take Go 365. I recommend it to everybody. 1 tablet thrice in a day for 3 months, because it is early and you're not taking in painkillers. You will have faster relief. You can please go to vedistry.com and you can do buy from there. That is 360. That is fine. Next we have Jayantaji. Meniscal tear is treated with rest, ultrasound, physio exercise. After a month, again the knee joint is paining, a little stiff. Is it normal? How long to cure fully, and normal activities can be done or not? Tears now take a lot of time to heal, and कट गया तो कट गया, आपने उसको टांका नहीं मारा है, तो any trigger will aggravate the pain again. So first of all, lose some weight. Ensure you give a lot of tender love and care to the joint. तो उसको तेल से डुबो के रखिए. आप सुबह शाम तेल लगाएं अपने घुटनों पे. Wear a knee support when you're walking for longer time or standing for longer time. Otherwise, the tear, जितना आप उस पे pressure डालते रहेंगे, ज़्यादा देर खड़े रहेंगे, it will cause morning stiffness and pain. Last 2 questions we'll take. That is Kaushalendra Singh ji.
I have slight slip disc in my L1 and L2 and L3 and L4, due to which I have pain in the buttocks and right groin pain in right buttocks more than the left. So, is the nerve. Slip disc requires traction, disc requires stretching, slip disc requires yoga, and slip disc requires proper posture. आप देखें कि आपकी मैट्रेस कॉटन की हो जब आप सोएं, बिकॉज ये जो बहुत सारी कॉयर फॉर्म की मैट्रेसेस हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे डू नॉट गिव सपोर्ट टू योर बैक द वे यू वांट इट. So shift your mattresses. That make a lot of difference to people with slip disc. Sleep in the correct posture so that your slip disc is not aggravated. Do Setu Bandhasan as I told you, and do a little bit of Shashakasan, which will stretch your spine. Now, how do you cure a slip disc? बिना stretch के वो ठीक नहीं होता, but don't do over aggravating exercises. This slip disc is treated more by an Ayurvedic doctor. मैं कोई भी oral supplement दूंगी उससे वो ठीक नहीं होने वाला. It requires care. So wherever you live, Marjorie, you please find somebody who can give you Ayurvedic therapy. Thank you, doctor. Last question for the day is my knees seem to be permanently swollen due to OA, but as I don't have any pain, I don't do anything about the inflammation. Is this okay, or should I take some action to deal with my problems? Are you a dancer? If you're a dancer and if you feel some bags near your knees, they are very normal. They are part of a dancer's knee, how they get damaged. फिर भी, because there is inflammation you see every day, you should take care that it reduces. Start taking Gokshur helps in this a lot. Gokshur एक tablet है, एक दवाई है. Gokshur के गूगल मिलते हैं, वो ले सकते हैं. So that will reduce your inflammation in the knees. Anywhere where there is some abnormality which is looking different, correct it. It is not normal. You were not born with it, and you should not sustain it. Thank you, doctor. So that was amazing session on joint pain. Many of them, they got their answers also. So you can pre-register for our health webinars. The link is in the chat. And to know more about the products, like what Dr. Manisha was talking about, you can go to www.vedistry.com. It's there in the chat. As well as you can book a free session, a free consultation with her. As well as she has given her personal number too. So please do contact. And thanks a lot to everyone joining, and thanks a lot, Dr. Manisha, for this. And see you soon, everyone. Thank you, everyone. Bye.